Good morning, everyone. So let's start with today's lecture. Okay, so in the previous lecture, we have discussed basic about our cyclic codes. Our topic will be our cyclic codes revision. Okay, just starting with the revision part. So what we have done, we have now in the cyclic codes, we will be dealing with the polynomials instead of matrix as it was used in the linear block codes. So in cyclic codes, there are three polynomials C of x that is of order n minus 1, and this belongs to a code word. Okay, so C of x will be a code word polynomial. Similarly, there is D of x that has order k minus 1, and it belongs to a message or data, whatever you want to call it. And similarly, there is another matrix, another polynomial G of x, which has an order n minus k, and this belongs to generator polynomial. It is known as a generator polynomial. When we are talking about g of x, then we must state that it must qualify two properties. First property is it must be a factor of 1 plus x to the power of n. Okay, or I can say it must be a factor of 1 minus x to the power of n, because in coding we are using mod 2 addition. So in mod 2 addition and subtraction both remains the same. Okay, and then if we talk about the second property, it must be Maulic. That means it must be of this type, n minus k minus 1. Okay, then g of I, x of I plus x to the power of n minus k. So these two properties, if any polynomial satisfies it, multiplying it with any data polynomial, you will be resulting in a code word, in a cyclic code word. Okay, and in cyclic code word, shifting, either left shifting or right shifting, results in another valid code word. Okay, so based on this, if we talk about this, if just take an example, if we take an example. Okay, so if we are talking about 7,3 code, a 7,3 linear block code is given, and it is given that g of x, that is generator polynomial, is something like this: x4, x3, x2 plus 1. Check whether g of x is a valid generator polynomial or not. Check whether g of x is a valid generator polynomial or not. Okay, so for valid polynomial, it must have an order of n minus k, that is 7 minus 3 equals 4. So it is Maulic because it has x to the power of 0. It has x to the power of 0, this, and it has x to the power of n minus k, this. Okay, so this is of this type. Next, we have to check whether it is a factor of 1 plus x to the power of 7. Check whether it is 1 plus x to the power of 7 factor or not. If it is, then 100% it is a generator polynomial. Otherwise, it is not a generator polynomial. So let's check it. So just dividing it, 1 plus x to the power of 7, and then we have taken x4 plus x cube plus x square plus 1. Okay, so just multiplying it with 3 x cube, I will be getting x to the power of 7 plus 6 plus 5 plus x cube. If someone has done that, please tell me. So I will be getting x6 plus x5 plus x cube plus 1 again. So again 2, that means x6 plus x5 plus x4 plus x square.
Okay, so I will be getting cancel 5 cancel. So lastly I will be getting x4 plus x cube plus x square plus 1. Okay, so plus 1, if I'm doing plus 1, then I will be getting the last part, that is x4 plus x cube plus x square plus 1. So remainder is 0. Okay, so what we have done, we have just checked that remainder, okay, the remainder, if 1 plus x to the power of n by gx remainder is 0, then it is a valid polynomial. Okay, so this was about the last lecture. Okay, so let's start fresh. So after this, we went for systematic and non-systematic code. For non-systematic, you just have to, just remind it, non-systematic, you just have to multiply dx into g of x. So this was non-systematic, but when we we have went for systematic codes, then what we have done, that we have shifted our dx or data bits left by n minus k positions, because we want that data should be first k bit should be data followed by n minus k bits of parity. Okay, so for that we have shifted that, and we have seen that x to the power of n minus k dx plus, if I am saying plus px, should result in a valid code word where px is the remainder of x to the power of n minus k dx divided by g of x. Okay, so this was discussed in the last lecture, and if we have seen the derivation of this, we came across we came across a we came across this, that x of n minus k dx, x of n minus k dx plus plus px, if we are dividing it. Okay, so x of n minus k dx divided by g of x, sorry, divided by g of x, okay, was resulting, if I can go back. Okay, so if I'm saying that x of n minus k dx, if I have shifted it, okay, and if I divide it by g of x, that is valid forward, then I will be getting a quotient, and a remainder, just a derivation what we have done in the remainder. Okay, and then what we have seen, that x of n minus k dx, if we multiply it on both sides, I will be getting q of x into g of x plus p of x. Okay, so I can get my code word, from two positions. I can get my code word either by multiplying the quotient with our generator polynomial, or I can get it by shifting n minus k dx plus p of x. So either we can go by this position method, x of n minus k dx plus px, or by multiplying the quotient with the generator polynomial. Okay, so we have seen a numerical, just remembering it again. Let's take another numerical. So a numerical is like this. Suppose I am saying that
d is equals to 0 1 1 0. D is equals to 0 1 1 0, and gx is equals to, that we have taken, x cube plus x square plus 1. Find a systematic code. Find the systematic code word. Find the systematic code. Okay. So how to find the systematic code? You just have to multiply x cube, that is x to the power of n minus k, into, this will be x square plus x square plus x. Okay, so if you multiply this with x square plus x, you will be getting x to the power of 5 plus x to the power of 4. Okay, dividing it with x cube plus x square plus 1. Okay, so if I get the remainder of x to the power of 5 plus x to the power of 4, x cube plus x square plus 1, so I will be getting remainder as my parity polynomial and a quotient. So let's divide it. If someone has divided it, please provide us the result. So if we divide it, I will be getting x5 plus x4 x cube plus x square plus 1. So I will be getting x square x5 plus x4 plus x square. Okay, so I will be getting a parity polynomial as x square, and q of x as x square. Okay, so if we want to find the code word, so this parity will be giving us will be giving us 1 0 0. Okay, the parity will have the maximum order of n minus k minus 1. Okay, so it will be x square plus x plus 1 1 0 0. So my code word will be going back. See, what was the data was 0 1 1 0. Data was 0 1 1 0, and parity bits are 1 0 0. So combining them, I will be getting 0 1 1 0 1 0 0. So can we get this by multiplying q of x into g of x? Just multiply it. I will be getting x to the power of 5 plus x to the power of 4 plus x square. So x to the power of 5, that means 0 1 1 0. Then 3 is missing. Again 3 is missing. Yes, 3 is missing. 0 1 1 0. 3 is missing. Then x square. This is x square. Then x this. Okay, 6 5 4. 3 is missing. 2 is available. X is missing, and x to the power of 0 is missing. So if I can get my code word, either by multiplying qx with gx, or by getting the parity and then adding it. So there are So two one doubt. methods. Yes. So value of n was not given here. What was not given? N. Value of n. Huh. We are taking this numerical from the previous class. So the code word is 7 comma 4. Okay, sir. ठीक है, नहीं भी पता होता, so you can see this data is 0 1 1 0. ठीक है, that means Hmm. data bits are 4. Hmm. ठीक, जनरेटर पॉलिनोमियल की ऑर्डर क्या होता है? n माइनस k. Okay. हाँ. ठीक है, so n माइनस k is 3. हाँ ठीक है ठीक है. ठीक है, so यहां से भी दिख रहा है कि ऑर्डर 7 ही होगा. ओके, ठीक है. so जनरेटर पॉलिनोमियल से ही बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है.
Okay, so this was about our numerical. Now our objective is, if we have to convert our polynomial, because it is also a part of a linear block code, cyclic code, a subclass of linear block code. So if we want to convert a polynomial into a matrix, a generator polynomial into a generator matrix, then what should be the process? Okay, so if we know that for data 1000, we get फर्स्ट रो ऑफ जी मैट्रिक्स. यदि हम 1000 को मल्टीप्लाई करें अपने जनरेटर मैट्रिक्स से, वी गेट द फर्स्ट रो ऑफ जी मैट्रिक्स. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट 01100, वी गेट द सेकेंड रो. मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ सेकेंड रो बचेगी, बाकी सब डिलीट, बाकी सब हट जाएंगे. सिमिलरली if you can see this will be third row. Okay, and lastly, if we talk about 7,4 code, we are talking about 7,4 code. So if we talk about this, we will be getting the fourth row of G. ठीक है. So if इसको लेके चले, so can we form a G matrix, systematic G matrix? Yes. If you can see that, if we can, how to find the parity, polynomial of the first row. Parity polynomial of first row कैसे मिलेगा? That will be x to the power of n minus k, into x. What will be the first? X cube divided by generator polynomial, that is x cube plus x square plus 1. अभी हम x cube plus x square plus 1 ही लेके चल रहे हैं. Another polynomial is x cube plus x plus 1, वो भी लिया जा सकता है. So I will be getting x to the power of 6 divided by x cube plus x square plus 1. Okay, because this, so I can get a result. सीधा लिख रहे हैं, you have to say remainder of this. Okay, yeah, taking the remainder of this. So remainder will be, I'm just writing it clearly, x square plus x. Okay, that means 1 1 0. Similarly, if we talk about the second row, so second row p of x will be remainder of x to the power of n minus k into x square upon same x cube plus x square plus 1. So that will be x to the power of 5 divided by x cube plus x square plus 1. Okay, so if you divide it, you will be getting a remainder of x plus 1. That means 0 1 1. Okay, so you have to continue this, because जब हम 7,4 कोड की बात कर रहे हैं, so we are talking about k rows. So you have to continue it till k rows. Okay, so the kth row will be remainder of x to the power of n minus k into last वाला क्या होगा, into 1. लास्ट वाला जो kth रो होगा, that is 1 divided by x cube plus x square plus 1. Okay, so you will be getting the last row. So basically for finding this, हम लोगों ने एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला बना लिया इसी को यूज करके. We have formulated it that कैसे रोज मिलेंगी if we have to find the rows. तो फर्स्ट रो कैसे मिलेगी, x to the power of n minus k, उधर से क्या मिला, प्लस k minus 1,
So that will make x to the power of n minus 1 divided by g of x. Remainder of this will give you first row. Similarly, remainder of x to the power of n minus 2 upon gx will give you second row. Okay, and so on, and so on, and so on till last, that is r of x to the power of n minus k upon gx, that will give you the third row. ये सारे के सारे p मिल रहे होंगे. This will be giving you p matrix, और g matrix होता क्या है? G matrix is I p. Okay, so you can formulate a G matrix using this. ठीक है, बाकी दो की वैल्यूज कोई कैलकुलेट करके बता सकता है तो बता दे. दैट विल बी इजी फॉर अस. पहले दो हम लोग ने निकाल लिया है 110. सो फॉर दिस आई विल बी गेटिंग a generator matrix equals to 1 0 0 0. For 1 0 0 I was getting 1 1 0. Then for 0 1 0 0 I was getting 0 1 1. And if you can check, you will be getting 0 1 0. You will be getting 1 1 1. And similarly for the last 0 0 0 1 you will be getting 1 0 1. ठीक है, ये चीजें आपको मिल जाएगी. ये रिमाइंडर किससे बना होगा? x टू द पावर ऑफ, किससे बना था? x क्यूब इंटू एक्स क्यूब, दैट इज x टू द पावर ऑफ 6 से. ये बना है x टू द पावर ऑफ 5 वाले से. ये बना है x टू द पावर ऑफ 4 से. एंड दिस विल बी x क्यूब. 7 माइनस 4 दैट इज x क्यूब. ठीक है, सो चेक कर लेना. यू विल बी गेटिंग अ जनरेटर मैट्रिक्स. ओके, टिल नाउ इज इट क्लियर? जनरेटर मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं? जनरेटर मैट्रिक्स बना सकते हो तो एच मैट्रिक्स भी बना सकते हो. If you can find the generator matrix, can you find the parity check matrix? Can you find the parity check matrix? Yes. Okay, so this was about our first part. How to make a generator matrix. Now coming to the encoder part. How to design a encoder, hardware encoder. How to design a hardware encoder. Cyclic code gives an advantage that for making a cyclic code, you just require a shift register and some mod 2 adders. Okay, mod 2 adders, that means XOR gates. Okay, so if we are talking about this, then how to make a encoder? So just starting our numerical with what we know, that g of x will always have an order, will be something like this: 1 plus g1x plus g2x square g1x. Okay, this is not available. Okay, just g1x okay plus g2x square plus g3x cube, and so on till lastly last function will be x to the power of n minus k minus n minus k. Okay, so if I am talking about this, I will be getting two functions, that is n minus k will be there and 1 will be always there. So to frame a encoder for this type of this type of polynomial, we use this
just okay. So we will be using this type of structure. See this, just explaining it, then I will be taking a numerical how to give. So in this you have weights for every g1 available, जितने तुम्हारे पास दिस g1 कोएफिशिएंट्स हैं उतने ही हम लोगों ने different different tabs यूज कर लिए हैं. These are the tabs. Okay, and the order of this polynomial, that is n minus k, we will be using that number of flip-flops. These numbers of flip-flops will be used. Between the two flip-flops there will be a mod to adder. Okay, and a gate is available that will switch on my circuit. First of all, we have to put the data inside this structure, in this encoder. जैसे ही जाएगा, then there is a clock available, because जब हम registers की बात करते हैं, flip flops की बात करते हैं, there must be a clock. So there is a clock available. In every clock instant a bit will be inserted inside this structure. Okay, if g2, suppose if I am saying that if we are using something like this, 1 plus x square plus x cube, x is not available, then I will be removing this arm. Okay, because g1 will be equal to 0, that means that will be an open circuit. जैसे जैसे बिट्स जाएंगी 4 बिट्स के बाद यू विल बी गेटिंग योर पैरिटी बिट्स वन आफ्टर द अदर. सबसे पहले एमएसबी निकलेगी, फॉलोड बाय सेकंड बिट, थर्ड बिट एंड लास्टली एलएसबी. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ टू मेक अ स्ट्रक्चर फॉर अ पॉलिनोमियल. ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ एग्जांपल. वी हैव टेकन ऑलमोस्ट all the types of structures. So 1 plus x square plus x cube I am taking. Okay, so if I am taking 1 plus x square plus x cube, if I am taking 1 plus x square plus x cube, how to make a hardware encoder for this? You just have to write which components are available. So I am just writing it 1, then x component is missing 0, then x square component is available, then x cube component available, that will be always available. Okay, just stretching a line. Where is my pointer? Okay, just stretching a line here. Okay, then this will always be connected because this will be available. Okay, then this will always be available, ये रहेगा ही रहेगा किसी भी सर्किटरी में. Then what you have to do, you have to place a flip flop here. ठीक है, हर के लाइन के नीचे एक XOR गेट होगा. then where there is no path, यहाँ पर कोई नहीं था, so it is basically a 0, then a flip flop is there. then again यहाँ पर 1 है, so I am stretching a line here, followed by a flip flop, and then again a adder. ठीक है, so simply to make an encoder for any type of polynomial, you just have to write the coefficients of respective order. 1 plus x square plus x cube. x missing था, हमने 0 लिखा, वहां पे लाइन नहीं खींची. x square अवेलेबल था, 1 अवेलेबल लिख दिया. x cube था, x cube में सीधी अवेलेबल लाइन बना दी गई. ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर. अब इस स्ट्रक्चर को बना लिया है, सो लेट्स टेस्ट कि क्या ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. Okay, so I am taking the structure and checking whether, so this will be our message bits. यहाँ से हम message enter करेंगे one by one, and I will be getting my LSB from here. This will be your P0. This will be your after this will be your P1. If I am saying this will be your P0, this will be your P1. Okay, and after this flip flop 1 2 3, if I am saying, okay, sorry,
After this flip flop, every flip flop you will be storing a p1, you will be getting a p1, and after this you will be getting a p2. So this will be your msb and this will be your lsb. ठीक है, सारे फ्लिप फ्लॉप्स इंडिविजुअल पैरिटी बिट स्टोर कर रहे हैं आगे आगे. So the last flip flop will be taking your MSB, and the first flip flop from this will be taking your LSB. Let's check it whether it is working according to our wish or not. So let's take a message. Let's start with this table. Message P0, P1, P2. Okay. मैसेज ले लेते हैं कोई भी. अभी हम लोगों ने ट्राई किया था 0110 के लिए. So let's take this message. Initially all the flip flops are reset, so I will be taking initial condition to be this. ठीक है, इनिशियली ये था. सबसे पहले बिट आई अवेलेबल 0. सब हम लोग यहाँ से एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो द फर्स्ट बिट दैट इज एंटर्ड इज 0. सो 0 जब एंटर किया then what will happen, यहाँ पर इनिशियली ये 0 था, यहाँ पे इनिशियली it was 0. See this, यहाँ पर इनिशियली it was 0. 0 plus 0 will be giving you a 0. So I can write, so what I am doing, I am XORing it with P2 minus. I am XORing it with P2 minus. So 0 XOR with 0 will be giving you a 0. Then P1 क्या होगा? P1 will be just the past value of P0. यहाँ से यहाँ पर कोई भी टैब नहीं अवेलेबल है. सो जो भी यहाँ पे होगा वो यहाँ पर पास ऑन करेगा. बस एक बिट शिफ्टेड बिकॉज डिले होगा हर फ्लिप फ्लॉप के बाद. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P2? जैसे हम लोग ने इसको एंटर किया सारे बिट्स में चले गए. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P2? P2 will be this XORed with the current content. जो भी आपका आ रहा था that is 0. ठीक है, फिर से देख लो. जैसे हमने मैसेज एंटर किया पहली बिट गई 0 गई. सो यहाँ पर 0 यहाँ पे भी कॉपी हुई, यहाँ पे भी कॉपी हुई. ठीक है, द नेक्स्ट कंटेंट फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोर कर लेगा? 0. ठीक है, लेकिन प्रीवियस बिट आगे मूव करी होगी. दैट मीन्स P1 विल बी प्रीवियस बिट ऑफ P0, दैट इज 0. P2 क्या होगा? P1 प्रीवियस XORed with जो करंट बिट आ रही है 0, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द P2. ठीक है, नेक्स्ट जब 1 एंटर हुआ, नेक्स्ट 1 एंटर हुआ. सो अगेन 1 XORed किसके संग हो रहा है? P2 माइनस के संग, या प्रीवियस जो बात है. तो 1 XORed with 1 0, दैट विल बी गिविंग यू अ 1. दैट विल बी गिविंग यू अ 1. ठीक, P1 में क्या जाएगा? प्रीवियस बिट दैट इज 0. ठीक, P2 में क्या जा रहा है? दिस XORed with 1. अब बिट सारे में 1 जा रही है, दैट मीन्स 1 0 1. राइट, देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट. यहाँ पे आओ. अब नेक्स्ट बिट कौन सी आई है? 1. नेक्स्ट बिट इज 1. 1 XORed with, हाँ सर 1 तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है ना, तो उसमें डिले भी तो होगा. आपने जैसे 1 XOR P2 माइनस किया है, तो अपन के पास 1 XOR 0 विल गिव यू 1. एंड देन ये कौन वाली लाइन की बात कर रहे हो? किस लाइन की बात कर रहे हो? सेकंड या फर्स्ट? सर जस्ट सेकंड लाइन सर, 1 XOR P2 माइनस. हाँ, तो 1 XOR P2 माइनस दैट इज 0. तो 1 प्लस 0 दैट इज 1. यस सर. ठीक, 1 फ्लिप फ्लॉप में जाएगा तो डिले होगा ना फिर. तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आ रहा होगा? फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या आ रहा होगा? है ना, वो तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे कनेक्टेड है. क्यू की बात पे कर रहे हैं. सर तो अपन ने तो 1 फ्लिप फ्लॉप में एंटर किया है. देखो, इफ डी फ्लिप फ्लॉप की हम बात करें, सिंपल सा इसकी यहाँ की बात करें, डी फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है,
डी फ्लिप फ्लॉप के हम लोगों ने इस पे लगा दिया 1, सो डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे भी तो अभी क्यू की वैल्यू 1 ही आ रही होगी ना, और यहाँ पे हम कहेंगे कि स्टोर भी 1 ही है अनटिल अनलेस दूसरी बिट नहीं आ जाती या क्लॉक चेंज नहीं हो जाती। यस सर। ठीक है ना, तो जब हम पहले की बात करें, लेकिन हर क्लॉक पे जो प्रीवियस डेटा होगा वही आगे फॉरवर्ड हो रहा होगा, नया डेटा जो आएगा वो तो उस पे स्टोर हुआ, प्रीवियस डेटा फॉरवर्ड हो रहा होगा। क्योंकि Yes, sir. जब हम बात कर रहे हैं इसकी यहाँ पर स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे नया डेटा आया वो अभी फॉरवर्ड हो रहा था, लेकिन इस फ्लिप फ्लॉप ने पुराना डेटा उठा के आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, बट सर जो P0 वाला फ्लिप फ्लॉप है उसमें तो पहले 0 स्टोर था ना, P0 पे 0 स्टोर था, तो फिर अब मतलब अब 1 आया है तो प्रीवियस डेटा जो है वो फॉरवर्ड हाँ करेगा, तो उसको 0 फॉरवर्ड करना चाहिए ना, अपन ने 1 क्यों लिखा है? कहाँ लिखा है यहाँ पे ये वाला, कौन सी सेकंड बात लाइन कर में रहे हो? P01 लिखा है ना। हाँ तो P0 का नया कंटेंट क्या है अभी, P0 का नया कंटेंट क्या होगा 1। सर 1 तो फ्लिप फ्लॉप में गया, फ्लिप फ्लॉप में पहले से स्टोर तो 0 था ना। ठीक है, तो अब फ्लिप फ्लॉप का कंटेंट क्या है, ये जो हम लिख रहे हैं P0 वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। यस सर। तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, जो उसका इंटरनल कनेक्शन है डी, जो डी फ्लिप फ्लॉप की हम बात कर रहे हैं, इफ डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे हमने 1 लगाया, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू, यस सर, दैट विल बी 1। 1। लेकिन जो आगे वाला फ्लिप फ्लॉप था वो, उसके लिए क्या होगा, सपोज आई एम सेइंग दो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, रुको वेयर इज माय पॉइंटर, ओके यहाँ पर हमने एक फ्लिप फ्लॉप लिया और एक यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर की बात कर रहे हैं सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा आ रहा है, फर्स्ट क्लॉक की बात करते हैं, सिंक्रोनस काउंट, यहाँ पे डेटा आया तो ये यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक पे शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन तब तक ये इसने क्या लिया, इसने प्रीवियस वैल्यू को उठाया p माइनस को और वो अपने में स्टोर कर लिया। फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर की बात करते हैं तो एक क्लॉक में एक डेटा शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज आगे वाले जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं दैट विल बी टेकिंग द प्रीवियस वैल्यूज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि जब क्लॉक लगाओगे, क्लॉक लगाते ही वो चेक करेगा हम उसके इनपुट पे क्या अवेलेबल है। यदि हमने क्लॉक लगाया सबका सिंक्रोनस सर्किट्स में, लोकेश यहाँ पे हमने सिंक्रोनस सर्किट लिया, सबके सब क्लॉक सेम कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे हमने क्लॉक किया, इसने इसको लैच कर लिया, और इसने किसको लैच किया होगा, इस फ्लिप फ्लॉप ने, इस फ्लिप फ्लॉप ने किसको लैच किया होगा, प्रीवियस डेटा ऑफ पी, प्रीवियस डेटा को। यस सर। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ पर हम लोग इनिशियली मान लिए सबको 0, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं P0 की, P0 की बात करते हैं, तो हम बोल रहे हैं सबसे पहले चेक कर लो कि डेटा क्या अंदर आ रहा है। सो पहली बिट थी 0, फर्स्ट बिट वाज 0, सो 0 एक्सॉर्ड विद 0 यहाँ पर सब में आ गया, सब सारे कंटेंट में आ गए 0, ठीक है। 0 आते ही क्लॉक जब इंसर्ट हुई, सो द फ्लिप फ्लॉप यहाँ वाले का इनपुट हो गया, ओके इस वाले की इनपुट हो गया 0, अभी हमने क्लॉक नहीं लगाई, इसका इनपुट हो गया 0, इसका हो गया P0 माइनस, इसका हो गया P1 माइनस प्लस जो कंटेंट आ रहा है वो, ठीक है। अब जब क्लॉक लगाया तो P0 का कंटेंट क्या बन गया, 0, P0 का कंटेंट क्या हो गया 0, ठीक। P1 का कंटेंट क्या हो गया, P1 का कंटेंट P0 माइनस, P0 का कंटेंट क्या हो गया P0 माइनस, ठीक। और P2 का कंटेंट क्या हो गया P0 माइनस P1 माइनस प्लस जो नया कंटेंट आ रहा है 0, दैट इज ये, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर जब हमने 1 एंटर किया, जब हमने यहाँ पे 1 एंटर किया तो 1 प्लस यहाँ पे पहले से अवेलेबल था 0, देखो P2 का कंटेंट क्या है 0, ठीक। तो 1 प्लस 0 हो गया, 1 प्लस 0 हो गया, लेट मी टेक 1 प्लस 0 हो गया 1, सो अब सब में आया है 1, ठीक है। यानी यहां पर हो गया है 1, यहां पर हो गया है P0 माइनस, दैट वाज पहले क्या था अवेलेबल, P0 की वैल्यू 0, यहां पर हो गया है, यहां पर पहले क्या था 0, 0 एक्सॉर्ड विद कंटेंट क्या आ रहा है 1, ठीक है। सो अब कंटेंट क्या हो गया 1, जब क्लॉक लगाई हमने
तो पी नॉट ने क्या लैच किया, पी नॉट ने क्या लैच किया है, 1, ठीक है, ये 1। P1 में क्या हो रहा है, प्रीवियस वैल्यू 0, और P2 में क्या आ रहा है, 0 एक्सॉर्ड विथ 1, ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1 एक्सॉर्ड विथ P3 माइनस, P3 माइनस था 1, 1 एक्सॉर्ड विथ P3 माइनस क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 0, 1 एक्सॉर्ड विथ P3 माइनस, ठीक है, P2 माइनस, P3 माइनस बोला, P2 माइनस दैट इज 0, ठीक। यहां पर क्या होगा, 1 कॉपी एज इट इज क्योंकि P नॉट माइनस, यहां पर क्या होगा 0 एक्सॉर्ड विथ कंटेंट क्या आ रहा है 0 दैट इज अ 0, ठीक। लास्ट चलते हैं, लास्ट बात, 0 एंटर किया, 0 एक्सॉर्ड विथ P3 माइनस, 0 एक्सॉर्ड विथ P3 माइनस गिविंग यू अ 0, यहाँ पे एज इट इज कॉपी प्रीवियस डेटा, 1 एक्सॉर्ड विथ 0 आई विल बी गेटिंग अ 1, ठीक है। सर थर्ड लाइन का P2 1 होगा, थर्ड लाइन का P2 ये सर पॉइंटर नहीं, इसकी बात कर थर्ड रहे हो, लाइन इसकी का, बात कर रहे हो, ये, हाँ हाँ इसकी बात कर रहे हो, कंटेंट क्या जा रहा है देखो, यहां पर P2 में क्या था पहले, यहां पे आ जाते हैं, यहाँ पे P2 पे क्या था, प्रीवियस लाइन देखो, P2 पे था 1, ठीक है, ओके, एंटर क्या किया हमने 1, 1 एक्सॉर विथ 1 क्या हुआ 0, 0 यहाँ पे भी गया, 0 यहाँ पे भी गया, 0 यहाँ पे भी गया, ठीक। अब P1 का पुराना कंटेंट क्या है, P1 का पुराना कंटेंट देखो क्या है 0 है, ये देखो P1 का पुराना कंटेंट 0 है, ठीक है, तो 0 विद 0 दैट इज 0, 0, ठीक है। और सर इसमें एक चीज और डाउट था हाँ बताओ, कि हाँ आपने एडर्स को जो हम्म, मैसेज से जो कनेक्ट किया है, तो आपने हाँ जैसे कैसे बताऊं, जो P2 और P1 के बीच में उसको कनेक्ट कर रखा है, पर जो मैं एक और P0, एग्जांपल लेता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे थोड़ा शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो इफ मुझको ये वाला एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, यू कैन गो थ्रू इट, लेट्स टेक अनदर, हमको इफ ये भी एक वैलिड है 1 प्लस एक्स क्यूब, दिस इज अ वैलिड फॉर 7,4 7,4 के लिए ये भी वैलिड है, ठीक है, जनरेटर पॉलिनोमियल, तो इसका बनाना है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं लिखूंगा 1 1 0 1, ठीक है, ये तो हमेशा 1 रहेगा और लास्ट वाला 1 रहेगा। तो फिर हमको लेना है लाइंस, अपनी लाइन कनेक्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बी गिविंग मी फर्स्ट लाइन, यहाँ पर एक लाइन अवेलेबल है, लाइन खींच दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है 0 है, दैट मीन्स नो लाइन, यहाँ पर एक लाइन अवेलेबल है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंटर, ये एंड दिस, फर्स्ट के बाद पहला फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, देन देयर विल बी अ एडर, देन इसके बीच में एक फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, यहाँ पर बिकॉज 0 है तो इसलिए मैं एडर नहीं बना रहा हूं, फिर देन देयर विल बी अ फ्लिप फ्लॉप एंड देन देयर विल बी अ एडर, ठीक है, यहां से आपका मैसेज बिट जाएगा, ठीक, दिस विल बी योर MSB, this will be your P1 and this will give you P0, ठीक है, this is a flip flop, this is a flip flop, this is a flip flop, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं ऊपर से भी, ओके, ठीक है। यस सर, तो ये पूछ रहे थे कैसे बनाया, हाँ ठीक है, अब आ गया, 0 को कनेक्ट नहीं करना, 1 को कनेक्ट करना है। हाँ 0 को कनेक्ट नहीं, तो यहाँ पे हम एडर लगा भी दिए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, मैंने एडर ही हटा दिया, ठीक है। ठीक है, रिमेंबर MSB और LSB के बीच में, जैसे प्रीवियस वाले की कोड की हम बात करें, प्रीवियस चलते हैं, यहाँ पर जब हमारा डेटा आ गया, सो हमारा कोड क्या होगा 0 1 1 0 1 0 0,
जो कोड वर्ड होगा दैट विल बी 0 1 1 0 1 0 0, ये एमएसबी है, दिस इज योर एलएसबी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिकॉज इस तरह चलते हैं हम। एक सेकेंड ड्रॉ कर ले, यस, देयर इज अ शिफ्ट रजिस्टर जो कि यहां से डेटा प्रोवाइड करेगा पैरिटी बिट्स। तो सर, पहले सबसे पहले एमएसबी निकलेगी। हाँ सर आपने बोला था मैसेज स्ट्रिंग जो है वो राइट टू लेफ्ट रीड कर रहा है। नहीं, सबसे पहले एमएसबी ही जाएगा, सॉरी, उसमें उस समय पहले एमएसबी देन एलएसबी।